Hello everyone. So in this lecture we will do the DC machine previous year questions regarding NLC exam. So here we start. So first question is here that a 500 kilowatt 500 volt 10 pole DC generator has a lap bound armature with 800 conductors. If the pole face covers 75% of pole pitch, the number of pole face conductors in each pole of a compensating winding will be. Okay, so the question here main thing is there, if the pole faces covers 75% of pole pitch, so the number of pole face conductors in each pole of a compensating winding will be. So here is the solution. So we know the formula of compensating winding conductor per pole is equals to Z upon A into P into pole arc upon pole pitch. Okay, so here Z is the conductors, which is 800 upon A is given as 10 and P is poles, and A equal to P. Okay, here the lap bound, so 10 pole. Okay, so into pole arc upon pole pitch. Okay, pole arc upon pole pitch means in this question, if the pole face covers 75% of pole pitch, means pole arc upon pole pitch is our 0.75. So when we solve this, we will get the compensating conductor per pole is equals to 6. Okay, so the next question is here, a 250 kilowatt 300 watt volt 6 pole DC generator has 720 lap bound conductors. It is given a brush lead of 2.5 angular degrees from the geometrical neutral. Calculate armature current and conductor current respectively. Okay, so we have to find only main armature current and conductor current. We know that armature current over that poles is given. Okay, so how we solve this, we have to find P equals to BI. We know that the formula, so P is given 250 kilowatt, voltage is 300, armature current we will find from here, which is 833 upon 0.3 ampere. Okay, that is armature current. And the conductor current, we know the formula that conductor current is equals to the that armature current over number of poles. Okay, so we will get the armature current also and conductor current also. The next question is that a 200 volt DC machine supplies 20 ampere at 200 volt as a generator. The armature resistance is 0.5 ohm. If the machine is now operated as a motor at same terminal voltage and current but with a flux increased by 20%, the approximate ratio of motor speed to generator speed. Okay, so in this question we have to find the ratio of motor speed to generator speed. Okay, so we know the EMF formula for both motor and generator. Okay, so here is the formula that Eg equals to B plus IaRa. Okay, this is for generator. Okay, B plus IaRa. So B know the formula of Eg, which is equals to the P phi NZ upon 60A. Okay, so Pz upon 60A, which is a constant here, so which is variable phi and n1. Okay, so phi n1 is equals to B plus IaRa. From here B will get n1. Okay, so n1 we will get, and for motor EB, sorry, here EB is there, so EB is equals to B minus IaRa. So again P phi n2 Z upon 60A is equals to B minus IaRa. P phi upon Pz upon 60A is constant, so n2 we will get. So we have to find the ratio. Okay, ratio of motor speed to generator speed. So n2 upon n1 is equals to B minus IaRa.
upon 125, okay, into 105 upon B plus IARA, because uh, phi comes downward when we have to evaluate n1 or n2. Okay, when we put the values of all the parameters, then we will get the answer, the ratio of the speed of motor and generator. So we will get the 0.75 ratio. Next question is here, a DC shunt generator, okay, having terminal voltage of 250 volt, it's delivering 195 ampere to load. Its armature and field winding resistances are 0.02 ohm and 50 ohm. What will be the value of generated EMF? So this is our shunt generator, okay. We have to only find the generated EMF. So V plus IA RA. But here in the generator, IA is equals to IL plus ISH. So IL is given 195 ampere and ISH is equals to B upon RSH, which is 250 over 50. IA will come 200 ampere and EG we will get 254 volt. A DC shunt generator is delivering 500 ampere at 220 volt. The shunt field current is 10 ampere. The armature resistance is 0.01 ohm. The stray power is 5000 watt. The efficiency of the generator is, we know the formula, the efficiency is equals to BIL, output upon input actually. So BIL upon BIL plus IU square RA plus PC, okay. So B is given 220 into IL is given 500 and okay, all thing is given, so stray power is also there 5000. So we will get the efficiency 95.65%. The next question is that a DC shunt generator supplies 450 ampere at 230 volt. The resistances of shunt field and armature are given. So what will be the armature voltage drop? Okay, so we have to find only the armature voltage drop. We know the formula again, EG is equals to B plus IRA. ISH we know that 230 upon V upon RSH. So IA again IL plus ISH, and we know the formula of voltage drop, which is equals to P is equals to P is equals to IARA. Okay, voltage drop B is equals to IR, V equals to I into R. So 454.6 into 0.025, we will get the 11.36 volt, our answer. Next question, a 6-pole lap bound DC generator has 300 conductors. EMF induced per conductor is 5 volt. This generator will generate EMF of, okay, so we have to find the generated EMF, okay. So number of conductors per pole is equals to, we know, Z upon A, okay. So conductor here is 300 and A is equals to that is lap bound, A is equals to P over 650. So EMF is equals to 50 into that EMF induced per conductor, okay, multiply into that number of conductor per pole. So EMF is equals to number of conductor per pole into that EMF of the conductor is given. A 6-pole web connected DC armature has 250 conductors and runs at 1200 rpm. The EMF generated is 600 volt. The useful flux per pole, okay, so we have to find the flux per pole. So we know the formula, E is equals to P by NZ upon 60A. EMF is given, so we have to only find phi. From that formula we will find easily phi. A series generator is connected in series to a feeder having 0.5 ohm resistance to boost the voltage.
The induced voltage is given by Eg is equals to 0.6 Ia, Ra is equals to 0.2 ohm, and Rs is equals to 0.3 ohm. Find the voltage boosted by the generator when delivering 400 ampere. Okay, we have to find the voltage जो जनरेटर हमें बूस्ट कर रहा है जब when it delivering the 400 ampere. Okay, so Eg is equals to 0.6 Ia is there. We know that Eg is also equals to V plus I Ra. Okay, so here Eg 0.6 Ia is equals to V plus Ia Ra plus voltage drop brush drop Ia RSH. सो Eg की वैल्यू हम 0.6 Ia प्लेस कर देंगे माइनस, और जो ड्रॉप्स हैं उस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो हम पुट्स कर देंगे वैल्यू. Ia को कॉमन लेने के बाद वैल्यूज को पुट करा और हम वोल्टेज की वैल्यू जो हमको निकल के आएगी 0.1 Ia. देयरफॉर हम जानते हैं कि जो हमारा आर्मेचर करंट है वो लोड करंट के बराबर है, यानी कि जो लोड करंट की वैल्यू है 400 एम्पियर वो आर्मेचर करंट की भी वैल्यू होगी. सो 0.1 इंटू 400 विच इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट. At 1200 RPM, the induced EMF of a DC machine is 200 volt. For an armature current of 15 ampere, the electromagnetic torque produced would be. So we have to find the value of torque. Okay, so torque power is equals to torque into omega, and torque is equals to power upon omega. Power is equals to B into I, and omega is 2 pi n upon 60. Put all the values of parameters, you will get the value of torque. A DC series motor developed torque of 20 Newton meter at 3 ampere of load current. If the current is increased to 6 ampere, the torque developed will be. Series motor means torque is proportional to Ia square. So T1 upon T2, we have to find the value of T2. So T1 upon T2 is equals to I1 square upon I2 square. ओके, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद वी विल easily get the value of T2. A DC shunt motor of 200 volt, 10.5 ampere, 2000 RPM has an armature resistance of 0.5 ohm and field winding resistance of 400 ohm. It drives a load whose torque is constant at rated motor torque. What is the value of armature current if the source voltage drops to 175 volt? We have to find the value of armature current. Okay, so how we will find? So first understand the question, what language is there. Okay, so first thing is here we have to find the reduction in voltage. Okay, because in last line voltage reduction value is given, voltage is reducing there, so V1 minus V2 upon V1 into 100. So we will get the reduction in voltage is 12.5%. Okay, after that we have to find the value of field current. Okay, so rated armature current जब हम निकालेंगे तो जो वैल्यू हमको दी है 10.5 और जो फील्ड करंट है -0.5, हमारा रेटेड आर्मेचर करंट फाइंड हो जाएगा 10 एम्पियर. ओके, अब हमारा जो वोल्टेज है वो 12.5% रिड्यूस कर रहा है, तो फ्लक्स भी हमारा 12.5% रिड्यूस करेगा बिकॉज they are proportional. Okay, so when flux is also reducing 12.5%, it means phi2 is equals to 1 minus 0.125. Okay, so we will get 0.875 the value of phi2. We know the formula torque जो proportional है phi I के है, तो लेकिन इधर क्या है, कंडीशन क्या है,
कंडीशन हमको T1 इक्वल्स टू T2 दी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5(1) IA1 इज इक्वल्स टू 5(2) IA2, तो उधर से हम इजीली IA2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन इज अ 200 volt 2000 RPM 10 ampere separately excited DC motor has an armature resistance of 2 ohm. Rated DC voltage is applied to both the armature and field winding of the motor. If the armature draws 5 ampere from the source, what is the torque developed by the motor? Okay, so we have to apply the formulas like power is equals to tau into omega, ठीक है। we know the formula P is equals to tau into omega which is also equals to EV into IA। तो देखिए कंडीशंस दी हैं तो हम EV1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करके EV1 फाइंड कर लेंगे, और दूसरा भी वैल्यू दी है दोबारा से वोल्टेज करंट की, तो हम EV2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि EV1 अपॉन EV2 N1 अपॉन N2 के इक्वल होता है, तो हम ईजिली EV1 अपॉन E2 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे और N1 की वैल्यू पुट करेंगे और N2 वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हम N2 फाइंड कर लेंगे तो हम एंगुलर स्पीड भी फाइंड कर लेंगे, ओमेगा इक्वल टू पाई N2 अपॉन 60, ठीक है। जैसे ही हमारा सेकंड कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी तो हम जानते हैं कि फार्मूले में आसानी से पुट कर देंगे टाउ ओमेगा इक्वल्स टू EV इंटू IA। उधर से हम टाउ की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लेंगे जो कि 4.29 न्यूटन मीटर हमारी निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, टेक्स अ करंट ऑफ 5.6 एम्पियर ऑन नो लोड एंड 68.3 ऑन फुल लोड। ओके, सो आर्मेचर reaction weakens the field by 3%. For RA equal to 0.18, brush voltage drops of 2 volt and RF equal to 200. The ratio of full load speed to no load speed. तो हमसे N1 अपॉन N2 की वैल्यू ऐसे पूछी है, रेशियो पूछा गया है हमसे N2 अपॉन N1 का। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम जानते हैं कि IL1 5.6 एम्पियर गिवन है, ISH हम ईजिली V अपॉन RSH फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद IA1 हम जानते हैं मोटर की कंडीशन में IL1 माइनस ISH। उसके बाद हम E1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे V माइनस IA1 RA माइनस दैट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ब्रश। जैसे हम E1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम IL2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे कि IL2 माइनस ISH आपको ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है सारी, ठीक है। फिर हम E2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और 5.2 की वैल्यू रिलेशन जो है 5.1 के साथ वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि N2 अपॉन N1 किसके बराबर होगा, E2 5.1 अपॉन E1 5.2। तो जो रेशियो हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक 240 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर है जो कि 40 एम्पीयर करंट ले रही है। व्हेन गिविंग इट्स रेटेड आउटपुट एट 1500 RPM, इट्स रेजिस्टेंस इज 0.3 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन रेटेड टॉर्क एट 1000 RPM। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फार्मूला आप जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में EV इक्वल टू V माइनस IA RA, है ना। तो देखिए E1 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, उसके बाद E2 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए जो कि 240 माइनस 40 0.3 प्लस R2, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 इज देयर। कंडीशन आप जानते हैं E1 अपॉन E2 N1 5.1 अपॉन N2 5.2 के इक्वल होता है, ठीक है। 5.1 IA1 अपॉन IO2 हम लिख सकते हैं, लेकिन रेटेड टॉर्क की कंडीशन में IA1 और IO2 इक्वल होंगे। फिर E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, है ना। E1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 228 वोल्ट है। E2 की वैल्यू N2 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। N2 की वैल्यू क्या है 228 माइनस E2 की वैल्यू क्या है 228 माइनस 40 R2 सॉरी। सो N1 अपॉन N2 कितना है 1500 अपॉन 1000। सो जब आप इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो R2 यू विल गेट 1.9 ओम। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
Okay, so we will do the theory questions regarding UP exams and also for NLC. So thank you.